Hello guys, today we will understand how to use basically ChatGPT on or using a Turbodata module. तो हम आपको क्या करेंगे इस तरीके का एक ये दे देंगे आप पूरा पूरा सोर्स कोड की कॉपी एंड when you go down to ChatGPT here टाइप में दिया ChatGPT आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, प्लस करिए और जब आप प्लस करेंगे इस फाइल को जो है नोटपैड फाइल को अपलोड कर लेंगे। करेक्ट, इसको अपलोड कर दीजिए और अपलोड करने के बाद जो है ये आ गया ये so now this particular file basically has got the entire business log of all our data warehouse as well as the RPA as well as how we understand that Tally works. ठीक है, इसमें सारे के सारे projects हैं. Now the machine will be able to answer a lot of the questions. For example, from the table, go voucher, ledger, meter. Tell me how to get the running sum. The opening balance is in ODS underscore ledger details tally and the debit and credit amounts are in ODS underscore ledger details. Is void is cancelled is optional are be excluded. लेकिन नो होगा, ठीक है ना। The running sum needs to be calculated by और ये machine आपको automatically tax और SQL code generate कर देगा. This is actually possible because we have put everything into one table and you can actually get extraction based on the cell. तो ये देखिए extraction based on SQL account machine सुन रही है, it is automatically generated. ये इस तरीके से SQL है, ठीक है ना। अब इसके बाद tax के लिए आते हैं. That's what I do.